Hi everyone, and welcome back to my channel. And today we are going to study a topic which is related to Western political thought and a theory and a philosophy of utilitarianism, or a theory of utility, that was basically propounded by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. So the topic would start in such a way that we are going to be studying about the precursors of the utilitarianism, and by precursors I mean the history and roots, that why this concept came into the limelight and a main topic of Western political thought. So the theory was given by Jeremy Bentham in the initial, and then we are going to study about his views and his philosophy. And one of the significant method that was presented by him, that was the hedonistic calculus, that was to measure the quantity of the utility. So if you have already studied something about the Western political philosophy, you would be aware of the fact that this concept was later taken by John Stuart Mill, and he modified the concept of utility in terms of quality and not quantity. So you know what I mean. So basically, in the later slides, I'm going to be talking about the views of John Stuart Mill in terms of his philosophy of utilitarianism and the concept of utility he presented. Later slides would be about the contrasting views and the criticism of the whole philosophy, and I'll be explaining that in detail. Before starting the lecture here, I want to mention something, that basically the strategy of my teaching methodology is that I upload a very detailed lecture of the topic, and then if you are not interested and if you don't wish to study a detailed lecture, what I do is that on the next day of the detailed lecture video, I upload a small 1 or 2 minute video that basically consists of all the material and the detailed points, but that is without my voice over. Okay, so like if you don't wish to study and open a detailed video, so you can also visit my short video, and that is only based on the slides. So now, apart from all this, we will begin with our topic. Okay, so introduction starts with the precursors of utilitarian thought and the roots when we study about that. So it can be traced back to the thinker of Epicurus. He was a Greek philosopher, and he was the person who first presented the principle of pleasure and happiness and the avoidance of pain as a fundamental principle of ethics. So what he meant, that he said that the things which are giving us happiness and pleasures are the only things that should be in maximum form, and we should always avoid pain, because that is the thing which gives us sadness in life. So talking about the principle of Jeremy Bentham and his philosophy of utility, he also said that the principle of maximizing happiness or pleasure and minimizing the sufferings or pain. So like he presented the in like he's known to be the father of utilitarian philosophy, okay? Because he took the principle from Epicurus and later on he presented it and with a modification, and he basically talked about the moral values of actions that should be determined by the extent to which they promote the greatest overall happiness or utility for the greatest number of people. So he talked in a sense that he's referring to the quantity, like if the happiness is for more people, so like it should be the maximum happiness, okay? So greatest number of happiness for the greatest number of people. So his utility was referring he referred to the concept of quantity. So Bentham was an English philosopher. You all know, if you are the students of political science, he presented his philosophy during the modern times, and he basically talked about the happiness and the ethical values and the moral values, which should be the ultimate goal of the people for having a good life and for achieving the good society. Here I have downloaded a PDF file for you people that is related to the timeline of the important Greek philosophers. So it starts from the pre-Socratic era, and that was the Thales of Miletus, and then there are all the Greek philosophers in the line, and then if you go again upwards, so there's the on the second point it's Socrates, and then below that it is Democritus, and then Plato. If you can see the highlighted term, the Plato, and then it is Aristotle,
and they were the ancient Greek philosophers. So these philosophers have contributed to the Western political thought. And then after Aristotle, if you can see the highlighted term, let me mark it for you people. It is Epicurus. So Epicurus was the person who presented the philosophy of utilitarianism that was related to maximizing the pleasures and happiness in life and minimizing the pain and sufferings. So this concept was later taken up by Bentham. तो ये एंशियंट फ़िलासफ़ी का टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मिडीवल टाइम्स आया और उसके बाद फिर मॉडर्न टाइम्स आया। सो दिस वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा एपिक्यूरियस के बारे में बता दूं। सो ही वाज अ ग्रीक फिलोसफर्स एंड मोस्टली ही इज़ नोन टू बी द ऑथर ऑफ द एथिकल फिलोसफी ऑफ सिंपल प्लेजर्स, ठीक है, या फ्रेंडशिप का की फ़िलासफ़ी दी थी इस तरह की, ठीक है। सो ही ऑल्सो फाउंडेड अ स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी जो कि फिर दैट वाज बेस्ड ऑन द सिंपल प्लेजर्स। इसकी जितनी भी फ़िलासफ़ी थी एंड द कोर ऑफ इट इज़ ओनली फाउंड इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स, और जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं इंसान के लिए। ही taught that pleasure was the highest good, और वो सोचते थे कि removing anxiety and enjoying the goodness in life. So this was about Epicurus, and now we get back towards our topic. Now coming towards another slide, that this is also based on utilitarianism and it is the continuation slide of the introduction part. So Bentham की जितनी भी utilitarianism का concept है, it is kind of a consequentialist ethical theory, ठीक है। consequences का मतलब कि जो बाद में जो actions के बाद जो आएगी, लेकिन that would be based on the ethical principles, ठीक है। moral principles को रखते हुए जो rightness और wrongness का concept है, या goodness and bad का जो concept है, right wrong lawful unlawful का जो concept है, तो वो एक outcome पे based है in terms of happiness and suffering। तो मैंने आपको पहले भी बताया दैट ही इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और उसकी एक फेमस लाइन है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसका अगर आप बेंथम की फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, सो इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द एथिकल प्रिंसिपल्स, द मॉरल वैल्यूज़ टू प्रिवेंट प्लेजर और प्रिवेंट पेन, टू ब्रिंग एंड प्रोड्यूस प्लेजर्स एंड टू प्रिवेंट पेन। अब जो इसने हेडनिस्टिक का कैलकुलस दिया था, ये एक बेसिकली मैथमेटिक वो थी, कैलकुलेशन थी कि हम किस तरह जो है इसको क्वांटिफाई करेंगे, मतलब इसको गिनेंगे, जैसे इन मतलब क्वांटिफाई ना फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, के कितने लोगों को खुशी मिल रही है। इसने एक प्रिंसिपल को जनरलाइज कर दिया था और इसको हेडनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मतलब उसने तो बात की है कि प्रोड्यूस हैप्पीनेस प्लेजर एंड टू प्रिवेंट पेन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक बंदे को खुशी मिलती है, जो सैडेस्ट पीपल होते हैं ना इन लाइफ में, मतलब किसी को मार कर अगर खुशी मिल रही है आपको, सो दिस इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी व्हाट बेंथम वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ही हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी along with the moral and ethical principles. So this was the point that I wanted to make it clear to you people, that making and producing happiness, but in terms of ethical and moral values. From the starting I am talking about that Bentham, his core philosophy अगर आप समझें तो that was about the moral and ethical principles and the concept of utility. इनकी जो इन्होंने जितनी भी philosophy present की थी और ये theory, तो that was in the late 18th and 19th century. Bentham का जितना भी काम था वो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, and that was on an introduction to the principles of moral and legislations. That was in 1789. और इस काम के अंदर ही टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और एज अ फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के ऊपर बेंथम का बहुत ज़्यादा काम है, दैट इज़ मच रिलेटेड अलॉन्ग विद द एथिकल प्रिंसिपल्स एज वेल, क्योंकि इन्होंने सोशल और लीगल रिफॉर्म्स की बात की है, और उसके अंदर ही हैव आर्ग्यूड फॉर द प्रिजन रिफॉर्म्स, एनिमल वेलफेयर, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये कुछ और भी हैं इस तरह के। और बेंथम जो है, इसका जो जितना भी एम्फेसिस था दैट वाज ऑन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि हैप्पीनेस होनी चाहिए, और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था, और कि फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए एक सोसाइटी में। सो दिस वाज हिज फिलॉसफी। क्रिटिसिज्म पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप लोग को समझ नहीं आती आई फिर भी बेंथम की फ़िलासफ़ी की,
बेंथम का एक बहुत फेमस कोटेशन है एंड ही सेज दैट नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरन मास्टर्स. So one he's talking about pain and the other is the pleasure. It is for them alone to point out whether we ought to do as well as determine what we shall do. So he's talking about that it is solely on the individuals that whether they pursue pain or they go towards the pleasure. So his theory is basically based on the theory of consequentialist, which means that जो एंड होता है ना वो जस्टिफाई करता है कि ये चीज़ हमें प्लेजर दे रही है या पेन दे रही है. तो अगर एंड रिज़ल्ट जो है वो हमें हैप्पीनेस दे रहा है, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, वो जो है एक गुड प्रिंसिपल है. और अगर एंड रिज़ल्ट जो है वो हमें पेन दे रहा है, सो दिस डिटर्मिन्स द रॉन्गनेस और द बैडनेस ऑफ द एक्शन, विच मीन्स दैट दैट इज़ गिविंग अ सफरिंग्स पेन, सो इट इज़ नॉट अ गुड प्रिंसिपल. तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इस तरह से हम प्लेजर और पेन को जो है वो समझ सकते हैं. दूसरी बात, इन द होल वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्लेजर्स एंड पेन. तो जो प्लेजर्स थे, जो टाइप्स ऑफ प्लेजर्स थे जो कि बेंथम की फ़िलासफ़ी में मिलते हैं हमें, सो ही टॉक्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एंड पेन, और वो इनको एनलिस्ट करता है इस तरफ. अब बेंथम कहता है कि वेल्थ है, पैसे हैं, पावर है, मेमोरी, ये चीज़ें, फ्रेंडशिप, रिलीफ, इमेजिनेशन, ये हमें हैप्पीनेस भी देती हैं और प्लेजर देती हैं. जबकि अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो जो फ्रेंडशिप है, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये चीज़ें हमें पेन भी दे सकती हैं. तो ये कुछ प्लेजर्स और पेन जो है बेंथम की फ़िलासफ़ी में हमें मिलते हैं. The third thing which I want to talk about is the hedonistic or hedonism, or the utility and utilitarianism. So what's the difference between two? So hedonism and utilitarianism, they are mostly similar in their evaluation of goals and moral behaviors. क्योंकि कुछ वर्जन्स हैं प्लेजर और पेन के जो कि मिनिमाइज़ करते हैं अपोजिट चीज़ों को, ठीक है. सो लाइक बोथ द हेडनिज्म एंड यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो है, दे बोथ व्यू प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस एज सिंपल एंड इमीडिएट, या आप कहें कि कॉम्प्लेक्स या मेच्योर चीज़, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है. लेकिन ये डिफ़र करते हैं फिर भी स्कोप में. और वो कौन सा स्कोप है? दिस इज़ द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि जस्टिफाई करता है बिहेवियर एज अ मॉरल. अब हेडनिज्म जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ टेंडेंसी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर पे बेस्ड करता है. जबकि यूटिलिटेरियनिज्म जो है, इट टेंड्स टू बी वेरी सोशल, लाइक फॉर द होल सोसाइटी, क्योंकि बेंथम का प्रिंसिपल है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. तो यूटिलिटेरियन जो है ना, अगर एक बंदा है यूटिलिटेरियन, मस्ट इवैल्यूएट द हैप्पीनेस रिजल्ट फॉर द टोटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन. तो जो कि टिपिकली रेफ़र करेगा ज़्यादा लोगों के ऊपर. जबकि हेडनिस्ट बंदा होता है ना, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को जो है हवा में फेंक के, लाइक यू नो, could very well throw the consequences to the wind if the action feels good to him या हर सेल्फ, ठीक है. तो हेडनिज्म जो है ना, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, प्रिंसिपल है. जबकि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो सोशल quality है. So this is what I wanted to mention about before going to the criticism slide. So I hope आप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेंथम की फ़िलासफ़ी ऑफ यूटिलिटी के बारे में. एंड नाउ we'll study about the criticism of this theory. So this is the criticism slide, and I have mentioned it in a very detail. The next slide is also about the criticism and is a continuation part of this slide. If you want to jot down the points you can, but I'm going to be talking about in a very limited way, because just to complete this lecture on time. Because in the same video I'm going to be talking about the John Stuart Mill philosophy of utility, so it's going to get a very detailed and a long lecture. हेडनिस्टिक कैलकुलस का जो फीचर है बेंथम की फ़िलासफ़ी में, इट इज़ वेरी मच इम्प्रैक्टिकेबल, क्योंकि आप कैसे एक प्लेजर और पेन को कंपेयर कर सकते हैं या उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग एंड यू कैन नॉट क्वांटिफाई और मेजर द प्लेजर्स एंड पेन. क्या पता अगर एक इंसान को एक चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है और वही खुशी एक दूसरे इंसान को इतनी ज़्यादा उसमें नहीं मिल रही, तो हाउ कैन यू क्वांटिफाई द हैप्पीनेस एंड पेन principle. The second point is also a continuation of the first point. It talks about the quantification of pleasures. So he's talking about in a very simplistic manner, जो कि हमें समझ नहीं आ रही बेंथम की फ़िलासफ़ी में कि वो कहना क्या चाहता है regarding the pleasures and pain, and at the same time he's also talking about the ethical and moral values as well.
थर्ड पॉइंट जो है वो है माइनॉरिटी राइट्स के से रिलेटेड। तो मैं आपको इसको इस सेंस में समझा सकती हूँ कि बेंथम की जो फिलॉसफी की एक लाइन है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो अगर वो हमें जो है ओवरऑल हैप्पीनेस अचीव करनी है, सो व्हाट इफ़ वी विल, मतलब हम उसके ऊपर माइनॉरिटी राइट्स को हमें पे करना पड़े उसके लिए, और माइनॉरिटी राइट्स की जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुकूमत का एक एजेंडा है, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद एन एजेंडा और अ प्लान टू सेट अप 100 हाउसेज अराउंड द स्पेसिफिक एरिया, एंड दोज हाउसेज वुड बी एलोकेटेड फॉर द स्पेशल ऑफिसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ऑफिसर्स को वो जगह मिल रही है, बट ऑलरेडी उस जगह में 200 लोग रह रहे हैं या 50 लोग रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेस प्रिविलेज्ड या लो क्लास है, तो उनकी जगह को तो आप ख़राब कर रहे हैं। सो हाउ कम लाइक यू आर अचीविंग at a certain point you are achieving a greatest happiness for the greatest number of people, but at the same time you are maximizing the pain and sufferings of other class as well. So next point is, the fourth point is क्वालिटी ऑफ प्लेजर्स, और ये पॉइंट बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रपोज किया था, क्योंकि बेंथम की जो फिलॉसफी है, ही टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो क्वालिटी ऑफ प्लेजर्स पे बात कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ प्लेजर्स का ये मतलब है कि अगर एक बंदे के लिए एक खुशी मैटर करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बंदे के लिए भी वही खुशी मैटर करे। तो ये वाला पॉइंट जो है फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी फ़िलॉसफी में इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एंड लो प्लेजर्स का फिनोमेना प्रेजेंट किया। मॉरल इंटीग्रिटी के पॉइंट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि मैंने एग्जांपल दिया है एक गवर्नमेंट के एजेंडा वाली, ऑफ बिल्डिंग सम 100 हाउसेज फॉर 100 ऑफिसर्स। तो अगर मॉरल इंटीग्रिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि अगर एक स्ट्रिक्ट यूटिलिटेरियन बंदा है, वो अगर हार्म कर रहा है एक बंदे को, तो हाउ कम लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, बिकॉज सेम बात है कि ही इज़ अगेन इंट्रोड्यूसिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द पेन ऑफ द पर्सन। सेकेंड स्लाइड है क्रिटिसिज्म की ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ द प्रैक्टिकलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। जो क्रिटिसिज्म हुई है बेंथम की फ़िलॉसफी पे, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, और हमेशा थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सिनारियोज़ हमारे पास रियल लाइफ में होते हैं उनको प्लेजर्स और पेन को जो है क्वान्टिफाई करना बहुत चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, क्योंकि हमें उन कॉन्सिक्वेंसेस से या एंड रिजल्ट से कैसे पता चलेगा कि एक ये चीज़ जो है हमें हैप्पीनेस दे रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ द अदर क्लास एज वेल। The seventh point is incommensurability. So it's again talking about the same point कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर एक बंदे को हैप्पीनेस मिल रही है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने लिए घर बनाया है, उसकी जो हैप्पीनेस की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के पास ऑलरेडी एक घर है तो उसकी हैप्पीनेस का लेवल भी सेम हो। सो हाउ कम द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड पेन कैन बी ऑन द सेम ग्राउंड्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, और उसको अगर जॉब मिल गई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर अनदर पर्सन एज वेल। तो ये चीज़ें जो है बेंथम की फ़िलॉसफी में लैक कर रही थी, एंड दीज आर द क्रिटिसिजम्स। द एथ पॉइंट इज़ आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल थ्योरी। तो द क्रिटिक्स ऑल्सो केम अप विद अ पॉइंट के मतलब बेंथम की थ्योरी एक हद तक आइडियल हो सकती है, लेकिन इट कैन बी अ नॉन आइडियल थ्योरी इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल लाइफ में मॉरल डायलेमास हैं, एथिकल डायलेमास हैं। नाइन्थ पॉइंट इज़ निगलेक्ट ऑफ राइट्स एंड जस्टिस। तो इस पॉइंट को भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि लाइक हाउ कम यू कैन प्रायोरिटाइज ओवरऑल हैप्पीनेस को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर एक क्लास को हैप्पीनेस मिल रही है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि दूसरी क्लास को भी वही चीज़ की हैप्पीनेस हो या वही डिमांड्स हो उस क्लास की भी। सो हैप्पीनेस और द पेन कैन नॉट बी जनरलाइज्ड एंड कैन नेवर बी क्वान्टिफाइड। The last point of this slide talks about no intrinsic value of the individual rights। अच्छा, इंडिविजुअल राइट्स की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे जनरल और कलेक्टिव यूटिलिटी की बात की गई है। अगर जनरल और कलेक्टिव यूटिलिटी ग्रेटर है, सो इट कैन सबड्यू एंड ओवरराइड द इंडिविजुअल राइट्स। Finally, coming towards the John Stuart Mill. So John Stuart Mill, he was a prominent English philosopher, because Bentham was also an English philosopher. So he took the theory of utilitarianism and modified it in his own way.
मिल का जितना भी यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है या सिग्निफिकेंट वर्क है वो उसकी किताब यूटिलिटेरियनिज्म इन 1863 में है, जिसके अंदर इसने उस बेंथम क्रिटिक्स को और इन सब चीज़ों को लेकर बेंथम के आइडियाज़ को लेकर फर्दर मॉडिफाई किया है। मिल ने जो है फिर आगे जाकर हायर और लोअर प्लेजर्स की बात की है, उसने इंटेलेक्चुअल मॉरल एस्थेटिक प्लेजर्स की बात की है जो कि दीज वर द हायर क्वालिटी देन मेरल फिजिकल एंड सेंसरी प्लेजर्स। Mill's version of utilitarianism is often referred to as rule utilitarianism क्योंकि उसने उन एक्शंस की बात की है जो कि जज किए जाएं ऑन द एंड दैट आर बेस्ड ऑन द जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स रादर देन असेसिंग ईच इंडिविजुअल्स एक्शंस। मिल ने, अगर इस पॉइंट को मैं आपको इस तरह समझाऊं, क्योंकि बेंथम ने तो बात की थी कि वो एक्शंस या कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें हैप्पीनेस दे रहे हैं तो वो गुड है, वो मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मिल जो है, जॉन स्टार्ट मिल, ही टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट आउट किए जाएं जो कि फिर हमें बताएं रिलेटेड टू द प्लेजर्स एंड पेन्स, और एक्शंस को प्रॉपरली जज किया जाए। एक प्रॉपर स्टेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर मॉरल एथिकल रूल्स होने चाहिए, एंड इसी तरह जो है एक सोसाइटी में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी आएगी। मिल की जितनी भी फ़िलासफ़ी थी उसके अंदर उसने इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात की थी, पर्सनल लिबर्टी की बात की थी, इंडिविजुअल राइट्स की बात की थी और कहा था कि इंडिविजुअल्स जो है वो फ्री हैं टू परस्यू देयर ओन हैप्पीनेस, लेकिन वो हैप्पीनेस जो कि दूसरों को हार्म ना करें, वो एक्शंस को परस्यू करना चाहिए जो कि दूसरों को हार्म ना करें, उनकी सफरिंग्स और पेन को ज़्यादा ना करें। बेंथम ने जो है एक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन का भी दिया है इन हिज यूटिलिटी फ़िलासफ़ी, और उसने कहा है कि इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं उनको जज किया जाए, एक प्रॉपर जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों की एक्शंस को जज करे। तो हमें तो पता है, अभी तक पढ़ चुके हैं कि बेंथम की जो फ़िलासफ़ी थी वो क्वांटिटी पे बेस्ड थी और जो कि एक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी बेंथम की फ़िलासफ़ी की। यूटिलिटी की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी था दैट वाज रिलेटेड टू क्वालिटी। ठीक है, हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इट इज़ रूल बेस्ड अप्रोच। Now coming towards the contrasting views and the distinction between the two philosophers with regard to the principle of utilitarianism. So the first point is approach to pleasure. बेंथम, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, बेंथम की जो फ़िलासफ़ी थी, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था, वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जबकि मिल की फ़िलासफ़ी जो थी वो हायर एंड लोअर प्लेजर्स की बात कर रही थी। ठीक है, वो क्वालिटी की बात कर रही थी ओवर क्वांटिटी। द सेकेंड पॉइंट इज़ असेसमेंट ऑफ एक्शंस। बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक एक्ट फोकस्ड ओरिएंटेड अप्रोच थी, जबकि मिल की फ़िलासफ़ी है वो रूल बेस्ड वो है अप्रोच है। द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। तो बेंथम की जो थी वो इक्वालिटी थी, ठीक है, मतलब जनरलाइज कर दिया था हैप्पीनेस को ओवरऑल एवरीथिंग, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो क्वालिटी की बात करते हैं कि हैप्पीनेस और पेन या प्लेजर्स एंड पेन में जो है क्वालिटी का डिफरेंस होता है। किसी का हैप्पीनेस या डिग्री ऑफ हैप्पीनेस कोई और हो सकती है, जबकि किसी और का कुछ और हो सकता है, किसी की पेन ज़्यादा हो सकती है, किसी की सफरिंग्स कम हो सकती हैं। द फोर्थ पॉइंट ऑफ द कंट्रास्टिंग व्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उन्होंने पर्सनल लिबर्टी की बात की है, उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स की बात की है, जबकि बेंथम की फ़िलासफ़ी में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती हमें, और उन्होंने हर चीज़ को जनरलाइज करके प्रेजेंट किया है अपनी फ़िलासफ़ी में। Now let's study about the criticism of the John Stuart Mill's philosophy of utilitarianism. So the first point talks about the higher and lower pleasures। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी फ़िलासफ़ी में प्रेजेंट किया है और उसने कहा कि प्लेजर्स और पेन जो हैं या सफरिंग है वो हायर और लोअर डिग्रीज़ की होती हैं, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हायर और लोअर प्लेजर्स जो हैं वो मतलब हायर प्लेजर्स जो हैं वो सेम है सब लोगों के लिए, या लोअर प्लेजर्स जो हैं हाई लो प्लेजर्स वो सेम है एक दूसरे के लिए, जबकि इन डिग्रीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। टाइम एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स एंड दे कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। Point number 2 talks about the incommensurability of pleasure. So this is the same point that I have mentioned in the Bentham's criticism, और ये वही बात है कि हम इन चीज़ों को
मेजर नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर्स और कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियल इम्पॉसिबल टास्क हैं, मेकिंग द यूटिलिटेरियन कैलकुलस डिफरेंट टू अप्लाई इन द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मिल ने जब यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलासफ़ी प्रेजेंट की थी, सो एट द सेम टाइम ही टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जिसमें हमें ये भी मिलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑटोनॉमी से चीज़ें जो है डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड कैन नॉट वर्क इन अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर। तो इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी से जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव फ्रीडम से जो है दे कैन डू वट एवर दे वांट टू। द फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट द ओवर एम्फोसिस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इनकी दोनों की फ़िलासफ़ी में बोथ टॉकिंग अबाउट बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात की है, एंड गोल्स के ऊपर बात की है। तो इतना ओवर एम्फोसिस है, जबकि इसमें इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ के बारे में कोई बात नहीं की गई, उनके मोटिव्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। इनकी टॉकिंग अबाउट कीपिंग इन व्यू देयर यूटिलिटी थेरी, उन्होंने इंडिविजुअल्स की इंटेंशंस के बारे में बात नहीं की भी। So this is also one of the criticism that they have talked about, and that is the overemphasis on consequences. जो पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट विद राइट्स एंड जस्टिस, तो जो यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलासफ़ी है ये मतलब राइट्स और जस्टिस को फिर भी साइड पे कर देती है विद परसूट ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस। क्या पता कि हैप्पीनेस को इतना ज़्यादा जनरलाइज करने के लिए ऑन द अदर हैंड दे आर मैक्सिमाइजिंग पेन एंड सफरिंग्स। द सिक्स्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट द नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द राइट्स। अच्छा, मिल की फ़िलासफ़ी में जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उन एक्शंस और मतलब फॉर एग्जांपल राइट है ना अगर एक इंडिविजुअल का, तो अगर वो अपने एक्शंस को परसू कर रहा है जो कि उसको हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो हाउ कम, और अगर एट द सेम टाइम वो दूसरे के एक्ट को हार्म कॉज कर रहा है, सो हाउ कम लाइक दे आर वर्किंग इन अ बैलेंस। सेवन पॉइंट इज़ अबाउट द रोल ऑफ ड्यूटीज़। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है इंडिविजुअल ड्यूटीज़, मोटिव्स, इंटेंशंस के बारे में कोई बात नहीं करता, बस दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। द एथ पॉइंट टॉक्स अबाउट कैलकुलेबिलिटी। तो हमें इनकी फ़िलासफ़ी से ये पता चलता है दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट दीज थिंग्स बिकॉज दे आर इम्पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट। आप कैसे किसी के एक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं दैट दे आर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस। Here I would explain the 10th point, which is lack of practical guidance. In की theory I have always talked about in my videos that there's a difference between theory and practice. क्योंकि हम जो थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, हम तो नहीं लाइक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ impracticability and there's some sort of illogical concept that could not be applied and comprehended in a real world. तो practical situations में हमारे पास इतने ज़्यादा complex और moral dilemmas हैं जो कि इन चीज़ों को specific answer provide नहीं करते इन complex चीज़ों के लिए. So this marks the end and this was all from my side. So like, subscribe and share. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.